नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त सरकारी अहम तरीन इम्तिहानात सेकेंड PUC के हो या दीगर शोबाजात के इस वक्त सामने आने लगे हैं और ऐसे में मुख्तलिफ़ कॉलेज स्कूल वग़ैरह अपने अपने एतबार से जो नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं तलबा व तालिबात ने उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में एक मशहूर व मारूफ़ कॉलेज है शहर बेंगलुरु का अब्बास खान कॉलेज फॉर वुमेन। बेंगलुरु ने एक बार फिर अपनी आला तालीमी रिवायत को बरकरार रखते हुए यहाँ पर नुमायाँ कामयाबी हासिल की है और गैर मामूली तौर पर इनका नतीजा रहा है। तालिबात ने न सिर्फ आला नंबरात हासिल किए हैं बल्कि जो है डिसिप्लिन में उम्दगी का और मेहनत में मिसाली तौर पर जो है अपनी मिसाल भी कायम की है। इदारा जो सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम है अपनी मेयारी तालीम, बेहतरीन तदरीसी निज़ाम और तालिबात की हमजहत तरक्की के लिए ख़ास पहचान रखता है। इस मौके पर जो है यहाँ पर इसके ज़िम्मेदारान, असातिज़ा और भी लोगों ने जो है अलग अलग एतबार से अपनी तालिबात को मुबारकबादी पेश की है। प्रिंसिपल और असातिज़ा ने भी पूरी तरह से मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं और वो भी अपने तलबा को मुबारकबादियाँ पेश कर रहे हैं। ये सारे मनाजिर जो है कैमरे में कैद हो चुके हैं, आप इसको देखें, मुझे इजाज़त है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ವಿದ್ಯಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 1977ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 74ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು 50ರ ವರ್ಷವನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಲೇಜು ಬರೀ ಹೆಸರು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾಲೇಜು. ಯಾವ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮ, ಯಾವ ಕುಲದವರೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಲೇಜ್ ಇದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ವರ್ಗದವರೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ಸ್ತರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಸದಾ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇರೋ ಫೀಸ್ಗಳಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ BA, HEG, HES ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ BCom, ಆಮೇಲೆ BBA, BCA. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PG ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇದೆ. MCom ಇದೆ, MA, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ವಾಗ್ಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಉತ್ತಮ ಪಾಠ ಮಾಡೋರು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಅವರು BOS ಮೆಂಬರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, BOE ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, BOE ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಸಹ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಸುತ್ತ ಹಸಿರು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಗಿಡಗಳು ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಲೇಜು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆದರಬೇಡಿ. ಯಾವ ಜಾತಿಯವರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ವರ್ಗದವರೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಸದಾ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ತೆರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅನೇಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತದ್ದು. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ವರ್ಗವೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. I'm Devi from the Department of Geography. I've been working in this institution for about 17 years and I have been giving the results 100% almost all the years. And
here we have a very good strength, and I'm really extremely grateful to our management who has been very generous, and always they follow with the secularism. And almost all the students ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And I've seen most of the Hindu students joining here, and they are giving a very homely atmosphere, very good facilities, like we have games, we have very good canteen facilities, we have karate facilities. So ella teachers tumba friendly agirtare illi. Whatever the doubts, whichever the time they come and ask for the doubts, they clarify the doubts. The teachers, they are all very hard working, and they work very hard to get a very good results. And to tell you, state results have been 85%, and we have got 96%. We are more than the state result, and nearly 15 students have got a distinction, and around 75% of the students have got first class. The rest have come to second class. Hardly we have very less not completed students. And you have any So scholarship? coming to our college, as far as the college is concerned, it is situated in the center of Bangalore city, in the corporation sector, where they have facilities with the buses and all other cabs, and even auto also. So even our college is providing free bus facilities, and sometimes of course they charge very minimal. Our admission fee is very, very nominal, and Scholarship is there. yeah, we also provide scholarship, especially for the Muslim students, even for the SC, ST candidates, and other minorities. So we have various around nearly 7 to 8 scholarship programs running in our college. So not only that, even our management is providing some concession for the students. Very good morning everyone. I am Kavya. I'm here chemistry faculty, teaching chemistry to the students, and I have been working here for 5 years. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. College is providing very good atmosphere, and infrastructure are really nice, and I am very grateful to the management and my colleagues that they are providing a friendly atmosphere here. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ to them, only application fee or very nominal up to 5,000 they are taking, that's all. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ, and they are coming up with the great concessions also, and admission this one scholarships also they are providing here. Major canteen is there, and a good well equipped lab is there. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ physics, chemistry, biology, home science is also a subject here. So everything are having, each and every subject are having a good equipped lab. ಸೊ ದೆನ್ ನಾವು ಈ ಸತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಗಾಟ್ 96% ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಲ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Being optimistic and passionate in my profession, that's how I introduce myself as Ruhi Begum, HOD of Commerce. And with the same mindset, I always strive and instill my students with the same positivity in their life. I'm happy that by encouraging them and motivating them, they have always proved themselves that they are the true Abbasians of this college, and I always guide them to be an independent and never be dependent on others. As I'm handling the subject accountancy, so I will be teaching them debit what comes in and credit what goes out. So with this help, it helps them to guide and prove themselves that and never bother about like how much they have gained or lost, but they have to just focus on their confidence and think about the how to just be secured in their life. So, and coming to my academics, I have always helped my students to just think about their dedication and efforts in their life, and with their the consistent effort they have proved themselves, and they have secured above 90% range, and I'm proud enough to share the success of
today's moment, because they have I have secured a 100% result, and because of that my students have always taken distinction. I always motivate them and aim them to secure the distinction level, and because of that whatever the motivation I have just given to them, and they have proved themselves that they are the true Abbasians of this institution. And I'm also thankful to the management, because they whoever have secured above distinction, and if they are topper, they provide the free education over here, and they will never charge any fees for them. And because of whatever they have just studied for, and the percentage they have secured in this institution, STEM institution, and because of that they encourage the students so that they can keep on growing in the whatever the courses they are just applied for. And that is the reason our management, I'm thankful for the management people also, because they are just not only giving the importance to the women empowerment, but also they are seeing like how they have to just keep on growing in this competitive world. One, as you can see in our STEM institution, they have just provided various facilities, like the latest techniques they have just introduced, that is smart boards, so that they can have the two-ways communication. It shouldn't be the one-ways communication for the students. They have to develop and gain more and more knowledge, and that is the reason they have just provided various other benefit, and they have provided the scholarship for the deserving students, so that they can get encouraged towards the education field. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Asma Fatima, attained doctorate very recently. I'm the HOD of English for degree section. To talk about this college, in PUC, 20 students have a secured distinction, and 75% of the remaining students in PUC have scored first classes. We are very proud of them. And for degree to add up, there are so many courses in our college. There are also students who are attaining above 80%. Here, our college management is very concerned about the women empowerment, women studies for women particularly. Therefore, they have got so many other benefits for the students. We have added canteen in our college. There are many infrastructure facilities provided. Screen lecturing are there. I think it is hardly provided in the other institutes. Teachers are accessing the screen for classes. Well equipped labs are there. Then lunch, free lunch is also provided. Then for admission purpose, students who secure 80 above percentage, they are given free admission. 85 above percentage are given free admission, except the examination fee. They will have to pay the examination fee, which is from the university, that is to be done by the students themselves. On the other hand, there is only university fee which is collected from the management here. There is no donation, there is no building fee, etc. So students who come here, they complete their PUC, they complete their degree, they enjoy the atmosphere, they secure high percentage. From 50% when they join here, they come to the level of 80 above percentage. That is the teaching. That is what we can proudly say about our teachers and about the environment that the students enjoy. So it is open to all. It is not confined with just Muslims. It is for all. That is Hindus, Muslims, Christians, anybody. It is a secular institute. For non-Muslims also, there are so many other scholarship benefits which the students are availing. It's not only limited to the Muslim students. So for scholarship awareness program, we have a program done by Sigma Foundation, which is in this month, which is going to be in this month, held in this month on 18th of this March. Therefore, we invite students, we welcome students who are interested to who are interested to know about more about the scholarship benefits, about the opportunities that they can avail. They can join our college, they can take the benefits, they can enjoy their stay in college, have a healthy living. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Central Muslim Association
जो सदियों से एक सदी से ज़्यादा खिदमत करके आ रहा है कौम की, स्पेशली एजुकेशन को लेके। जैसे अब्बास खान कॉलेज है जो 1974 में इस्टेब्लिश हुआ, ये प्रीमियम वुमेन कॉलेज है जिसके अंदर PCMB, PCBH साइंस में और कॉमर्स स्ट्रीम्स में कई कोर्सेज हैं। आप देख सकते हैं बच्चों का रिज़ल्ट माशाल्लाह मोर 96% है ओवरऑल रिज़ल्ट। और इसी तरह डिग्री में BCom, BBA, BCA और मास्टर डिग्री में MCom और MA है। मैं गुजारिश करता हूँ आप सबसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कॉलेज में आके एडमिशन लिए। ये प्रीमियम वुमेन कॉलेज है जिसके अंदर बहुत ही नॉमिनल फीस में बहुत उम्दा एजुकेशन दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ मुल्क के 30 रियासतों में और 7 से ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज़ में सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन कर्नाटका एक वाहिद इदारा है जो एजुकेशन और उनको स्टे हॉस्टल में और फिर एजुकेशन में हर फील्ड में, जैसे इनकी बस CMA की MS पॉलिटेक्निक है, CMA वुमेंस कॉलेज है और बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है और रिसर्च भी करने जा रहे हैं। और हाल ही में अभी शॉर्टली जो है कावल बैसंद्रा में और दूसरी जगह मुख्तलिफ जो कैंपस हैं वहाँ पे स्किल सेंटर्स भी आ रहा है। मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ इस इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और CMA की तरफ से इसी 18 को आने वाले हफ्ते के दिन एक बहुत ग्रैंड, बल्कि बेंगलुरु का सबसे बड़ा करियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसके अंदर मुल्क के नहीं मतलब दुनिया के मशहूर करियर गाइडेंस और एक्सपर्ट अमीन मुदस्सिर का प्रोग्राम किया जा रहा है इसी कैंपस के अंदर। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। उस प्रोग्राम की खासियत ये है, उसमें स्कॉलरशिप जो मुख्तलिफ CSR कंपनीज जो कॉरपोरेट सेक्टर से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड से जो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है उसका मालूमात बताया जाएगा और उसको कैसे हासिल करना वो बताया जाएगा। और अमीन मुदस्सिर 365 साल के जो है इसी में लगे रहते हैं, रिसर्च में लगे रहते हैं। कौन सा कोर्स करने से क्या काम डिमांड रहेगा, फ्यूचर में कौन से कोर्स का डिमांड नहीं रहेगा, कौन से एडवांस स्टडीज़ लाए गए हैं वो काम करते हैं। तो इस प्रोग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum. I am Hina Banu. I have completed my PUC from Abbas Khan PU College from the stream Commerce CEBA. I am happy to share that I have scored 96% with full marks in computer science in my board exam. I sincerely thank my college and the institution of CMA who supported me in everything. I am very grateful for my parents who supported me in every situation. I am very grateful that I have taken admission in this college. Our college provides many scholarships for the students, especially for the orphan students. And the teachers are very good in teaching lecturers and all. They will provide smart lectures with smart board. And the teachers are very cooperative with us. The teachers of Abbas Khan PU College are very good in nature and they will motivate us whenever we face difficulty in our subjects, in our topics or any other related. Assalamu alaikum. Myself Bushra. I have completed my PUC from Abbas Khan PU College from the stream of Commerce CEBA. I am very glad that I am standing here and thanking this institution for providing me the best education. I sincerely thank my parents who supported me in everything, and I thank this management, CMA management and Abbas Khan PU College for providing the education. And I have scored 95% in my board examination with full marks in computer science and 90 plus marks in other course subjects. I sincerely thank all the teachers who are very cooperative. They taught us very good things from the real life to the syllabus. They are very cooperative and supportive. Thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ारा तरन्नुम है और मैं अब्बास खान कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बार डिस्टिंक्शन स्कोर किया है सेकंड PUC साइंस में। और मैं इसका क्रेडिट अपने माँ बाप को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि अपने माँ बाप की दुआओं से ही मैं कर पाई हूँ और अपने टीचर्स की गाइडेंस के बगैर मैं नहीं कर सकती थी। और साथ ही कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ के फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं माशाल्लाह, और यहाँ के स्पोर्ट्स भी है और बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं। अब्बास खान PU कॉलेज फॉर वुमेन्स।
और मैं बहुत खुश हूँ। और साथ ही मैं ये डिस्टिंक्शन में कितने मार्क्स लिया आपने? डिस्टिंक्शन में 85% लिया या और मैंने एक शायरी भी लिखी है इसके ऊपर, जो मैं कहना चाहूँगी, जो मैंने खुद से लिखी है। तो दुआ तो कर अपनी तकदीर सुलझाने की, तू दुआ तो कर अपनी तकदीर सुलझाने की, तू ना कर कोशिश दूसरों को गिराने की। बन जाएगी राह खुद बखुद ए इंसान, तू ख्वाहिश तो कर ऊंचाई पर जाने की। ये बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। इंशाल्लाह आगे भी स्टडीज़ करूँगी। Assalamu alaikum. Myself Sofia Khanam, and I am from Abbas Khan PU College for Women, and my stream is commerce, and I have scored 83% in my boards, and I am very much thankful for the teachers and for my parents who always supported me. And I want to talk about this college. Means there are many facilities for the students who are suffering from financial condition, and there are many facilities for the students in this college. There are van facilities, there are libraries, there are computer classes for the students, and I am very much grateful to be the part of this college. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाफरीन खानम है। मैं अब्बास खान पीयू कॉलेज फॉर वुमेन की तालिबे इल्म हूँ, और मैंने यहाँ पर सेकेंड पीयूसी कॉमर्स EGPA में 86% स्कोर किया है। माशाल्लाह मैं अपने मार्क से बहुत खुश हूँ, और ये सब मेरी मेहनत की वजह से और मेरे वालिदैन और टीचर्स की सपोर्ट की वजह से हुआ है, और कॉलेज के मैनेजमेंट। और माशाल्लाह अब्बास खान पीयू कॉलेज फॉर वुमेन के लिए बहुत अच्छी कॉलेज है। यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छी कैंटीन है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, और यहाँ पर कुंफू कराटे भी सिखा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लैब भी हैं, और स्मार्ट टीवीज़ का जो है वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर नमाज रूम की सबकी फैसिलिटीज़ भी है।